फर्स्ट हीट अ कढ़ाई और अ पैन जो भी अवेलेबल हो उसमें pour some oil and heat it, then add some chopped curry leaves, let it splutter और उसके बाद आप डालिए coriander और green chili का paste and cook this paste for like a minute or two जब तक कि it releases some oil. Add salt as well. Once the masala is cooked और वो oil release करता है, then you have to add mashed potatoes and boiled and mashed potatoes and shredded chicken, boiled and shredded chicken, जिसमें मैं सिंपली गार्लिक जिंजर गार्लिक पेस्ट और सॉल्ट डाल के श्रेड करना है आपको. आप ये बॉयल पोटैटोज़ और चिकन के मिक्सचर को पहले से ही मिक्स करके रख सकते हो एंड यू कैन ऐड इट. नाउ मिक्स दिस वेल एंड इसे जब तक मीडियम फ्लेम पे मिक्स कीजिए जब तक कि दिस इंटायर मिक्सचर लीव्स द पैन, जैसे आपको दिख रहा है वीडियो में. वंस दैट डन लेट इट कूल एंड ऐड ग्रेटेड चीज़ जो भी आपके पास अवेलेबल हो. आई हैव यूज्ड अ ब्लेंड ओवर हियर. वो मिक्स कीजिए बट मेक श्योर मिक्सचर पूरा कूल है, उसके बाद ही डालिए ये चीज़. एंड देन यू कैन वंस ट्रिम द ब्रेड साइजेस, जिसके एजेस निकालिए. टेक एनी सैंडविच ब्रेड दैट्स अवेलेबल. और उसके बाद वंस यू आर डन विद cutting the edges, dip all the edges in water, just the edges, not the entire bread. इसको आप all four sides को पानी में dip कीजिए, then pat it and put the mixture filling, and then you have to mold it into a bread roll kind of a thing. You just have to make sure कि पूरा अच्छे से सील हो रहा है, अदरवाइज अगर आप फ्राई करोगे तो मिक्सचर अलग हो जाएगा रोल में से. So just make sure that you're sealing it nicely and now you need to let it dry. जैसे ये dry होगा then only fry. You cannot fry it जब ये wet है, otherwise पूरा split open होता है. Then deep fry these bread rolls in hot oil and as you see, once they turn golden brown, you're done. As you see, they're golden brown now and you have to drain them and serve them with ketchup or chutney, whatever. You can hear, as you see, can you hear the crunching in it? You can see the melt.